Hello students, we have to calculate force between two parallel current carrying wire. दो वायर्स हैं A and B, right? इनमें करंट फ्लो रहा है IA and IB. They are separated by a small distance D, right? So magnetic field will produce in both the conductors. पहले कंडक्टर A को मैं कंसीडर कर रहा हूँ. A में IA करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई BA इक्वल टू म्यू नॉट IA upon 2 pi d, right? 2 pi d. So all points of the conductor B will lie in the magnetic field produced due to current IA in conductor A, right? According to right hand rule, this magnetic field is directed downward, right? So force experienced by length L of conductor B, force experienced by length L of conductor B फोर्स हमने FB लिख लिया, फोर्स ऑन B ड्यू टू A भी लिख सकते हो, FBA. ये आ जाएगा ILB साइन थीटा होता है, तो करंट क्या है IB है, लेंथ हमने L ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड BA है और साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे. सो FBA की वैल्यू आ जाएगी FBA इक्वल टू IB इंटू L. BA कितना हो जाएगा, म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई डी, राइट? सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अरेंज करके, FBA इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन 2 पाई डी into L, right? So according to Fleming's left hand rule, the direction of this force is towards conductor A, right? By similar consideration, we can find FAB, force on conductor A, force on conductor A due to magnetic field produced by conductor B, right? So it will also directed towards conductor B. So FAB equal to minus FBA. So parallel current attract and anti-parallel repel.